Question. Again, a very interesting question on corporate failure and reconstruction. Discuss the possible reasons for finance director's suggestions that Conejo company could benefit from higher levels of debt with respect to risk from protection against acquisition bids and from tax benefits. Prepare a note for the board of directors which estimates and briefly comment on the change in the value of current bond and the coupon rate required for the new bond as requested by CFO. ठीक है. Estimate the Macaulay duration of the new bond based on the interest payable annually and face value repayment, and Macaulay's duration based on the fixed annual repayment of the interest and capital as suggested by CEO. Estimate the impact of two proposals on how the funds may be used on next year's forecast earnings, forecast financial position, forecast earnings per share, and on forecast gearing. ठीक है. Using the estimates in B1, B2, B3, discuss the impact of the proposed financial reconstruction and proposals on the use of funds on Conejo, possible reactions of credit rating companies, and on the expected credit migration, including the suggestions made by the CEO, Conejo's equity holders, and current and new debt holders. A part बाद में करेंगे. Let's look at this. Comment on change in value of current bond and coupon rate required for the new bond as requested by CFO. ठीक है. Conejo is a listed company based in Ardila and uses the dollar as its currency. The company was formed around 20 years ago and was initially involved in cybernetics, robotics, and artificial intelligence within the information technology industry. At that time, due to the risky ventures Conejo company undertook, its cash flows and profits were very varied and unstable. Around 10 years ago, it started an information system consultancy business and a business developing cyber security systems. Both these businesses have been successful and have been growing consistently. This in turn has resulted in stable growth in revenue, profit, and cash flow. The company continues its research and product development in artificial intelligence and robotics, but this business unit has shrunk proportionally to the other two units. Okay, just under 8 years ago, Conejo was successfully listed on Ardila's National Stock Exchange, offering 60% of its share capital to external equity holders, while the original founding members retained the remaining 40% of equity capital. ये क्या था? 60% of share capital to external, and founding members ने कितना रखा? They kept remaining 40. The company remains financed largely by equity capital and reserves, with only a small amount of debt capital. Due to this and its steadily growing sales revenue, profits, and cash flows, it has attracted a credit rating of A from the credit rating agencies. At a recent meeting of board of directors, the CFO argued that it was time for Conejo to change its capital structure by undertaking a financial reconstruction and be financed by higher levels of debt. As part of her explanation, the CFO said that Conejo is now better able to bear the increased risk resulting from higher levels of debt finance, would be better protected from predatory acquisition bid if it was financed by higher levels of debt, and could take advantage of the tax benefits offered by increased debt financing. She also suggested that the expected credit migration from a rating of A to a rating of triple B, if the financial reconstruction detailed below took place, would not weaken Conejo company financially. ठीक है. So she argued that capital structure should be changed and financed by higher levels of debt. ये उसका proposal है. As part of her explanation, CFO said that Conejo is now better able to bear the increased risk resulting from higher levels of debt finance, would be better protected from predatory acquisition bid if it was financed by higher level of debt. So what she is saying is that if you have a higher level of debt, then chances of other companies acquiring you, that predatory behavior, you might be able to tackle it. ठीक है. The BOD decided to consider the financial reconstruction plan further before making a final decision. The financial reconstruction plan would involve raising $1320 million new debt finance consisting of bonds issued at face value. The bonds would be redeemed in 5 years' time at their face value of 100. The funds raised from the issue of the new bonds would be used to implement one of the following two proposals. Proposal 1, either buy back equity shares at their current share price, which would be cancelled after they have been repurchased, or invest in additional new
invest in additional assets in a new venture business. ठीक है. Then they have given you extract of forecast financial position, non-current asset, current asset, total asset, share capital, reserves पूरा दिया है. Conejo company's forecast after tax profit for next year is 350. Current share price is 11. The non-current liabilities consist solely of 5.2% coupon bonds with a face value of 100 each, which are redeemable at their face value in 3 years' time. These bonds are currently trading at 107.8 per 100, so market price दिया है. The bond's covenant stipulates that should Conejo Company's borrowing increase, the coupon payable on these bonds will increase by 37 basis points. Company pays a tax rate of 15% per year. After tax return on new investment is 12. ठीक है. आपको पूछा क्या है? Changes in value of current bond and coupon rate required for the new bond as requested by the CFO. ठीक है. They have given you current government bond yield curve A, triple B, double B का दिया है. The finance director wants to determine the percentage change in the value of Conejo company's current bond if the credit rating changes from A to triple B. Now you know कि credit rating of A means better credit worthiness as compared to credit rating of triple B. ठीक है. Now she wants to determine the coupon rate at which new bonds would need to be issued based on the current yield curve and appropriate yield spreads given above. Conejo's CEO suggested that if Conejo paid back the capital and interest of the new bond in fixed annual repayments of capital and interest through the 5-year life of the bond, then the risk associated with extra debt finance would be largely mitigated. In this case, it was possible that credit migration by credit rating companies from A rating to triple B rating may not happen. He suggested that comparing the duration of the new bond based on the interest payable annually and the face value in 5 years' time with the duration of the new bond, where bond is paid in fixed annual repayments of interest and capital, could be used to demonstrate the risk mitigation. बहुत सारा डेटा है यहाँ पे एंड नॉट ऑल ऑफ इट इज वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. आपको बहुत अलग अलग चीजें दिखेंगी इसमें. अब what they are asking you is first thing, पहली चीज what is the expectation कि change in the value of current bond and coupon rate required for new bond. ठीक है. Change in the value of the current bond, but why do you think is the value changing? सबसे पहले वो समझो. ऐसा इंफॉर्मेशन कहाँ पे दिया है कि वैल्यू ऑफ द बॉन्ड और व्हाट मेक्स यू बिलीव दैट द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड विल चेंज. The finance director wants to determine the percentage change in the value of Conejo company's current bond if the credit rating changes from A to triple B. ठीक है. अब right now you must be having a certain value of the bond. ठीक है. अभी बॉन्ड का वैल्यू कितना है? अभी बॉन्ड का वैल्यू आपको दिया है. See, these bonds are currently trading at 107.8 per $100. ठीक है. अभी मार्केट में क्या रेट चल रहा है? 107.8 का रेट चल रहा है. ठीक है. अब अगर बॉन्ड का रेटिंग चेंज हो जाता है, ठीक है, राइट नाउ द रेटिंग इज ए. इफ द रेटिंग चेंजेस टू ट्रिपल बी, द बेसिस पॉइंट्स विल बी 70, 81, 94, 105, 112. और ये क्यों चेंज हो रहा है? द कंपनी विल टेक हायर लेवल्स ऑफ डेट, है ना. एंड she also suggested that the execute expected credit migration. What is expected credit migration? Migration means you are moving to something. Right now you have a small proportion of debt and eventually the proportion of debt is increasing in this case. ठीक है. So she also suggested that expected credit migration from a rating of A to a rating of triple B if the financial reconstruction detailed below took place would not weaken Conejo company financially. ठीक है. So माइग्रेशन मीन्स यू आर मूविंग फ्रॉम एन ए रेटिंग टू अ ट्रिपल बी रेटिंग. तो उसमें क्या होगा? सी ट्रिपल बी बॉन्ड का आपको यील्ड स्प्रेड करके दिया है ईयर 1, 2, 3, 4, 5. नाउ when they say that the credit rating has changed, naturally the basis points will increase because जैसे credit rating A से triple B हो गया तो that means the company became less credit worthy, है ना. जब credit rating triple A होगा तो company will be most credit worthy. अभी ये credit rating आपका कम हो रहा है. Now
What are the spot yield curve rates? What is spot yield curve? Spot yield curve is ये गवर्नमेंट बॉन्ड इफ यू आर इशूइंग विच इज इन अ वे रिस्क फ्री बॉन्ड, अगर वो आपने लिया, ठीक है, इफ यू टेक अ गवर्नमेंट बॉन्ड तो उस पे रिटर्न मिलता है 1.5%। बट दिस इज अ रिस्की बॉन्ड, ये ट्रिपल बी रेटिंग वाला बॉन्ड है। तो ट्रिपल बी रेटिंग वाले बॉन्ड में ईयर वन का आपका इंटरेस्ट रेट कित सॉरी आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा? योर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न विल बी 1.5 plus 70 basis points. ठीक है, let me write it down here for you. So this is part B1. When the credit rating of the bond drops from A to triple B, that means the credit worthiness of the borrower company, credit worthiness of the borrower company has declined slightly. And since credit worthiness has declined, ठीक है, that means the risk faced by investors is more, ठीक है, and since risk is high, the return expected by the investors will also go up. ठीक है, since risk is high, the return expected by the investors will also go up. So अच्छा, यहां पे देखो, if in an A-rated bond they expected 40 basis points above the government yield, here they expect 70 basis points above the government yield। देखिए यहाँ पे इनका एक्सपेक्टेशन था कि यार गवर्नमेंट बॉन्ड सबसे सेफ बॉन्ड है, ए रेटिंग वाला बॉन्ड उससे थोड़ा कम है, वी एक्सपेक्ट एडिशनल 40 बेसिस पॉइंट्स। यहाँ पे ट्रिपल बी वाला बॉन्ड है तो नेचुरली वी एक्सपेक्ट अ स्लाइटली हायर, डबल बी होगा तो नेचुरली और इंक्रीज होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल if credit rating is A, the company expects a higher return of 40 basis points over and above the risk-free rate associated with the government bond. ठीक है, and if the credit rating is triple B, the investor would expect a slightly higher return of 70 basis points over and above the return on government bonds। ठीक है, अब so let's get down to calculating what is the expected yield on a triple B rating bond। Okay, so expected yield percentage on a triple B rating bond। ठीक है, so government yield curve spot rate, इधर लिखो ईयर, ठीक है, इधर लिखो ट्रिपल बी basis points and expected return। 1 2 3 4 5
ठीक है। इधर से आपको 1.5, 1.7, 1.9, 1.5%, 1.7%, 1.9%, 2.2% एंड 2.5%। ठीक है। ये गवर्नमेंट यील्ड कर्व का स्पॉट रेट है। अब ट्रिपल बी का रेटिंग कितना है? 70, 81, 94। 70 बेसिस पॉइंट्स मीन्स 0.70%, 0.84%, 0.94, 1.05% एंड 112 बेसिस पॉइंट्स मीन्स 1.12%। ठीक है। कितना होगा? दिस इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न। आई कैन ऑल्सो कॉल दिस यील्ड। ठीक है। दिस इज द यील्ड ऑन द गवर्नमेंट, ऑन द ट्रिपल बी रेटिंग वाला बॉन्ड। ठीक है। अब ये तो आपने एस्टैब्लिश कर लिया, बट सिर्फ ये एस्टैब्लिश नहीं करना है बॉस। आपको ये बताना है, व्हाट यू हैव टू टेल इज कि व्हाट इज द wants to determine the percentage change in value of Conejo company's current bond. Now, if you remember, whenever we do investment appraisal or any M&A, whatever thing, what is the rate that we use for discounting? The rate that we use for discounting is always the cost of capital. And what is cost of capital? Cost of capital is expectation of the provider of finance expressed in numerical terms. Don't you think this is the expectation of the provider of finance expressed in numerical terms? ठीक है। Whenever we discount cash flows, the rate used for discounting is the cost of capital. And cost of capital is nothing but expectation of provider of finance expressed in numerical terms. ठीक है। We can see that expectation in the last column, which is expected return yield। ठीक है। ये लास्ट कॉलम है, दिस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस expressed in numerical terms. Usually what we do is we use the same rate of discounting each year, but here the expectation is changing from year to year, so you will have to discount it accordingly। ठीक है। Usually we discount using the same rate every year, but in this case the expectation of providers of finance is changing every year। ठीक है। So we will use this, so we will use the rate applicable for each year for discounting the bond related cash flows। अब ये बताओ, bond related cash flows क्या होते हैं? Bond related cash flows are basically the cash flows which you expect from holding that bond, so interest and principal। ठीक है। अब this bond was issued at whatever point in time, आज how many years have gone by, we have to understand that ना, कितना साल has passed so far। Do you have any information to that effect? The non-current liabilities consist solely of this bond which are redeemable at their face value। मतलब अभी you are going to revisit that calculation because the yield has changed। ठीक है। अब आपको फर्स्ट 3 years का इन्फो लगेगा, करेक्ट। सो यहाँ पे what I will write is, I will write down year, I will write down cash flows, I will write down rate
for discounting. ठीक है. अब what is the coupon rate? The coupon rate is, this is a 5.2% bond, है ना. But the bond's covenant stipulates that should Conejo company's borrowing increase, the coupon payable on these bond will increase by 37 basis points. अभी 5.2 है, but company का borrowing has increased, which means the updated coupon rate will be 5.2% plus 0.37%. ठीक है. So यहाँ पे we will say debt covenant says that coupon rate will increase if borrowing increases, which is the case here. So, updated coupon rate is 5.2% plus 0.37%, which is 5.57%. है ना. 3 years का बॉन्ड है, 1, 2 एंड 3. कैश फ्लोज क्या आएंगे आपके? 100 is the face value of the bond. So 100 into 5.57%. And in the last year, another 100, which is the redemption rate. ठीक है. Rate for discounting you will get from here. ठीक है. Now what do you need? You need present value of cash flow into 1 upon 1 plus this percent raised to 1. Okay, 107.81. This is the present value of future cash flows, and the value of any item on the face of this earth is nothing but the present value of future cash flows. तो ये हो गया आपका काम. This is 107.81. What is the current market value? The current market value is 107.8. Estimate and briefly comment on the change in the value of current bond and the coupon rate required for the new bond as requested by CFO. I think वो हमने बता दिया. What is the coupon rate? Now, although the credit rating has declined from A to triple B, है ना? But still, what can you say about the bond value? Has it changed significantly? I mean, I hardly see any change, है ना. मुझे तो कोई change नहीं दिखा इसमें. Make sense? है ना. So this is exactly what you're supposed to write. Even if there has been a change in the conditions with respect to the bond, काफी कुछ change हुआ है, but still this one specific part has not resulted in any change in the bond value. ये आपका first part है. ठीक है. If you read the question carefully, आपको आएगा. Otherwise, you will get stuck. एक एक लाइन को you have to understand, interpret and apply. ठीक है. शांति से अप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. देख लो एक बार, हैव अ लुक अच्छे से. टेल मी वेदर यू वांट मी टू स्क्रॉल अप और डाउन. देख लिया. ठीक है. ये फर्स्ट पार्ट था. नाउ the finance director wants to determine the percentage change in value of Conejo company's current bond, which we have discussed if the rating goes from A to triple B. Furthermore, she wants to determine the coupon rate at which the new bonds would need to be issued based on the current yield curve and the appropriate yield spread. Now let's see what is this new bond issue that is going to happen.
The BOD decided to consider the financial reconstruction plan before making a final decision. The financial reconstruction plan would involve raising 1320 million new debt finance consisting of bonds issued at face value of 100. The bonds would be redeemed in 5 years time at their face value of 100. The funds raised from the issue of the new bonds would be used to implement one of the following two proposals. ठीक है, ये दो सिचुएशन होने वाले, मतलब these are the two alternatives in front of them. So न्यू बॉन्ड जो है उसका फेस वैल्यू इज गोइंग टू बी 100, उसका रिडेम्पशन इज गोइंग टू हैपन आफ्टर 5 years. ठीक है, एंड रिडेम्पशन इज गोइंग टू बी एट फेस वैल्यू. ठीक है, न्यू बॉन्ड्स, टोटल अमाउंट टू बी रेज्ड 1320 million. ठीक है, देन व्हाट एल्स डू वी हैव, व्हाट इज द फेस वैल्यू per bond, $100. What is the redemption value per bond? This is also $100. अपने को पूछा क्या है, अपने को पूछा है coupon rate required for the new bond. ठीक है, Conejo CEO suggested that if Conejo paid back the capital and interest in the new bond in fixed annual repayments of capital and interest through the 5 year life of the bond, then the risk associated with extra debt finance would be largely mitigated. Excuse me, in this case, it was possible that credit migration by credit rating from A to triple B may not happen. He suggested that comparing the duration of the new bond based on interest payable annually and face value in 5 years' time with the duration of the new bond where borrowing is paid in fixed annual repayments of capital should be used to demonstrate this risk mitigation. ये अलग part हो गया. Now I need some information on the वैल्यू ऑन द वैल्यूएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉन्ड. ठीक है, यहाँ पे ये भी मेंशन्ड है कि बॉन्ड्स कॉवेनेंट स्टिपुलेट्स दैट अगर न्यू बोरोइंग आया तो कूपन पेएबल ऑन दीज बॉन्ड्स विल इंक्रीज बाय 37 बेसिस पॉइंट्स दैट वी हैव कैलकुलेटेड. एक और बात यहाँ पे देखो, it is going to be financed by higher levels of debt. The CFO said that Conejo is now able to bear the increased risk resulting from higher levels of debt finance. It would be better protected from predatory acquisition if it was financed by higher levels of debt, could take advantage of tax benefits offered by higher levels of debt finance. She also suggested that expected credit migration from A to triple B, the and in the financial reconstruction, it would not weaken the company financially. ठीक है, द कंपनी विल नॉट बी वीकेंड फाइनेंशियली. अब मुझे क्या देखना है, व्हाट आई हैव टू सी इज कि एस्टिमेट द कूपन रेट रिक्वायर्ड फॉर द न्यू बॉन्ड. ठीक है, व्हाट शुड बी द कूपन रेट फॉर द न्यू बॉन्ड. ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, व्हाट वी नीड इज, ये दिस इज अ रिडीमेबल डेट है ना, एंड इन केस ऑफ redeemable debt, the cost of capital is, you know that cost of capital is nothing but the IRR of the company. Now, why would someone be, why would someone be willing to pay 100 today in case of this bond? Why would someone be willing to pay $100 per bond today? कोई क्यों तैयार होगा 100 रुपीज पर बॉन्ड देने को? बिकॉज this person believes that the present value of future cash flows that he would receive from such bond will at least be equal to 100.
ये तो प्रिंसिपल हमने यू ना व्हेन वी वर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू वैल्यू इक्विटी, हाउ टू वैल्यू डेट, हाउ टू वैल्यू एनीथिंग, हम यही प्रिंसिपल यूज कर रहे थे ना. व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट एनीबडी इज विलिंग टू पे? इट इज नथिंग बट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज. नाउ लेट द कूपन रेट बी C%. ठीक है, कूपन है तो सी बोल रहा हूं मैं. सो ईयर 1 2 3 4 5. ठीक है, आपने ईयर लिखा. यहां पे आई विल राइट डाउन कैश फ्लो. ठीक है, 100 into C%, है ना, विच इज सी. राइट, 100 into 2% is 2, तो 100 into C% is C. C प्लस ईयर 5 में 100 रुपीज विल बी रिडीम्ड, है ना. अब रेट यूज्ड फॉर डिस्काउंटिंग. क्या लेना है रेट यूज्ड फॉर डिस्काउंटिंग? ट्रिपल बी बॉन्ड का तो यहां पे एक्सपेक्टेड यील्ड है अपने पास. ठीक है, सो राइट डाउन द डिस्काउंटिंग फैक्टर एट रेलेवेंट रेट. ठीक है, सो 1/1 प्लस दिस रेस टू दिस. दिस इज द डिस्काउंटिंग फैक्टर. ठीक है, व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो? इट इज कैश फ्लो इंटू C into 0.978 प्लस 100 into 0.837, तो ये हो जाएगा 83.7. राइट, आई एम मल्टीप्लाइंग C प्लस 100 into 0.837, सो C into 0.837 प्लस 100 into 0.837. करेक्ट, वो लिख लिया आपने. एंड व्हाट आफ्टर दिस? अब ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो का टोटल लो तो टेल मी द टोटल. 4.566. ठीक है, सो C इंटू 4.566 प्लस 83.7. डोंट यू थिंक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो शुड बी इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो? विद दिस इंफॉर्मेशन कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ C फॉर मी? C कितना आएगा बताइए? ये हो जाएगा 100 - 83.7 डिवाइडेड बाय 4.566, है ना. 100 - 83.7 डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 3.57%. So what should be the coupon rate on the new bond? The coupon rate on the new bond should be 3.57%. काफी अलग टाइप का क्वेश्चन है. We have not seen anything like this in any other question. So from a bond valuation perspective, this is a very good question to begin with. कॉन्सेप्ट कुछ नया यूज नहीं किया, इट्स प्रिटी मच द सेम दैट वी हैव यूज्ड, बट ऐसा कभी क्वेश्चन हमने देखा नहीं था, सो दिस इज अ गुड प्रैक्टिस ऑन दैट. ठीक है, आप ये देखो, लुक एट द कैलकुलेशन. आई विल बी बैक इन 1 मोमेंट एंड देन वील कंटिन्यू. ठीक है, द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन is for 6 marks. Estimate the Macaulay's duration of the new bond based on interest payable annually and face value repayment, and Macaulay's duration based on fixed annual repayment of interest and capital as suggested by the CEO. So CEO क्या बोल रहा है? He is saying
You have to compare duration. अब Macaulay's duration का formula do you remember? If not, let me Yes. बताओ. Year into present values percentage. Hmm. Mm, Uh, for example, do this, right? yes, In time one into amount उसका DCF निकालो, time weighted cash flow flow, which is DCF into the year number. ठीक है. And then apply the formula. Numerator is column E, time weighted cash flow. Denominator is sum total of all the present value. इससे you will get your Macaulay's duration, right? अब यहाँ पे that is exactly what we need to do. अब year on year, we'll first of all have to calculate the present value of cash flows, correct? And what offer is this? This offer is when comparing the duration of the bond based on interest payable annually and face value in 5 years time. मतलब year 1 to year 5 आप interest pay करेंगे and year 5 में आप principal repayment करेंगे. ठीक है. This is the proposal that he has in mind. Year 1, ठीक है. Then cash flow, उसके बाद डिस्काउंटिंग फैक्टर, राइट. यहाँ पे लिखिए rate for discounting, then discounting factor at the relevant rate. I believe these are the values that we should be using, है ना? Because year on year the rate is different. यहाँ पे क्या आएगा कैश फ्लो में? This should basically be 100 into coupon rate plus 100. नहीं, but 5.57 is not the coupon rate. My mistake. It's 3.57. ये 3.57 है. ठीक है. These are my cash flows. ठीक है. अब इनका अपने को क्या करना है? वी हैव टू डू टाइम वेटेड. ओ डिस्काउंटिंग फैक्टर, कॉपी पेस्ट, ये भी कॉपी पेस्ट. अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, ठीक है. पीवी ऑफ कैश फ्लोज इनटू ईयर, है ना? कैसे करेंगे? ईयर नंबर अपने पास है, राइट? दिस इनटू ईयर नंबर. टेक द टोटल. टेक द टोटल. So, what will be your Macaulay's duration? Macaulay's duration is time weighted PV of cash flow upon PV of cash flow. कितना होगा? 4.66 years is the Macaulay's duration. Under what circumstance? Under ये वाला सिचुएशन, ठीक है. इंटरेस्ट इज पेएबल एनुअली, मतलब एवरी ईयर इंटरेस्ट पे होगा, प्रिंसिपल आपका ईयर एंड पे होगा. As opposed to where the borrowing is paid in fixed annual installments, fixed annual repayment of interest and capital. Fixed annual repayment, when we used to do APV, तब हम calculate करते थे. यहाँ पे I should give the heading Macaulay's duration when interest is paid annually and principal repaid at end of year 5. Patience वाला question है.
डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। पेशेंस अगर आपने छोड़ दिया तो यू विल नॉट गेट योर मार्क्स। व्हेन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स आर पेड ईच ईयर। ठीक है। अब हाउ विल वी कैलकुलेट इक्वल इंस्टॉलमेंट्स टू बी पेड? यू नो, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स कैसे आएगा ये? दिस इज अमाउंट पेएबल और द अमाउंट ऑफ लोन डिवाइड डिवाइड बाय एन्युटी। annuity factor for 5 years, 3.57%। करेक्ट। अब यहाँ पे अमाउंट ऑफ लोन विल टेक द फेस वैल्यू, है ना। अब एन्युटी फैक्टर अपने को निकालना आता है, 1 - 1 + r रेस टू -n अपॉन r, 4.506। ठीक है। सो इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स 100 डिवाइडेड बाय 4.506 कितना आएगा बताइए? 22 पर 22.90। 22.19। ठीक है। अब इसके साथ सेम कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बट नेचुरली नाउ द वैल्यूज आर गोइंग टू बी डिफरेंट। 22.19 ईच ईयर, है ना, सेम अमाउंट ईच ईयर। करेक्ट। सॉरी, माय बैड। 2.92 almost is the Macaulay's duration when equal installments are paid each year। अब जैसे आपका अगर राउंडिंग ऑफ किसी किसी इसमें उन्होंने क्या किया है, दे विल कीप इट एट 2 digits आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, तो हो जाएगा 4.5 फिर उसको अगर कर देंगे 22.17 तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बट नॉट दैट इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिकॉज राउंडिंग ऑफ का है। ठीक है। यू अंडरस्टूड द एक्सपेक्टेशन ऑफ द क्वेश्चन। ये आप तभी कर पाओगे व्हेन यू आर पेशेंट इनफ। इफ आपने जल्दबाजी किया तो गड़बड़ हो जाएगा। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मकॉलेज ड्यूरेशन याद करना एंड देन सिचुएशन को समझना। इन द फर्स्ट पार्ट दे हैव सेड कि you will pay interest each year, principal at the end. Second case में they have said you will repay amounts in equal installments each year, and you have calculated the Macaulay's duration. With me so far? यस सर। 12 मार्क का रिक्वायरमेंट है। थोड़ा सा अनयूजुअल क्वेश्चन है, बट थिंक अबाउट इट एज इफ इसके साथ यू हैव नाउ अंडरस्टूड कि जो भी मतलब मकॉलेज ड्यूरेशन पे क्वेश्चन आया या बॉन्ड वैल्यूएशन पे क्वेश्चन आया, तो वी हैव इनफ नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन ओनली। ठीक है। अब estimate the impact of two proposals on how the funds may be used on next year's forecast earnings, forecast financial position, forecast EPS and forecast gearing। What do you mean by two proposals? ये जो 1320 million आप raise करेंगे, what will you use that for? You will either buy back equity shares at their current share price, which would be cancelled after they have been repurchased, or invest in additional assets in the new business ventures। ठीक है। आपको क्या तीन चार चीजों पे उसका इम्पैक्ट निकालना है। यू हैव टू कैलकुलेट इम्पैक्ट ऑन फोरकास्ट अर्निंग्स। अभी करंट अर्निंग्स का कुछ इंफॉर्मेशन दिया है आपको? हैव दे said anything about it? And its after tax return on the new investment is estimated at 12%।
व्हाट इज न्यू इन्वेस्टमेंट, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? हाउ विल यू स्टार्ट ऑफ? व्हाट इज द फोरकास्ट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, दिया है कहीं पे आपको? कोनेजोस फोरकास्ट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट फॉर नेक्स्ट ईयर इज 350 मिलियन, क्लियर कट दिया है। तो कुछ बैठ के कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। 350 मिलियन है, फोरकास्ट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है। ठीक है। अब करंट करंट सिचुएशन, प्रपोजल वन, प्रपोजल टू, दोनों आपको चेक करना है। ठीक है। पार्ट बी 3, पर्टिकुलर्स, करंट, प्रपोजल वन एंड प्रपोजल टू। ठीक है। सो व्हाट आर माय forecast profit after tax? 350, 350, 350। ठीक है। अब what I have done is I have raised 1320 million, है ना? 1320 million I have raised, and on that my coupon rate is 3.57। ये न्यू बिजनेस मतलब ये ऑल द न्यू ट्रांजैक्शंस है। ठीक है। इसमें कुछ भी ओल्ड ट्रांजैक्शन का या एग्जिस्टिंग बोरोइंग का इंपैक्ट आई एम नॉट कंसिडरिंग, दीज आर ऑल न्यू फ्रेश बोरोइंग्स। जो करंट है वो तो वैसे ही चल रहा है, आपका कुछ चेंज नहीं हो रहा है उसमें। ठीक है। सो फोरकास्ट पीएटी लेस interest on borrowing, which is 1320 million into 3.57%। 1320, सॉरी इधर नहीं आएगा, इधर आएगा। 1320 इंटू 3.57%, 47.124। इसमें डोंट यू थिंक यू विल हैव टू ऐड बैक टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट, है ना? सो दिस इंटू 15%। यू कुड हैव शोन इट नेट ऑल्सो, हाँ। मतलब आपने सीधा नेट करके 40.06 भी आप दिखा सकते थे, बट आई जस्ट चोज टू ब्रेक इट डाउन दिस वे। ठीक है। अब नाउ the bond covenant stipulates that should Conejo Company's borrowing increase, the coupon rate payable on these bonds, which bonds, the existing 5.2% का जो bond है, उसका coupon rate will go up by 37 basis points. Now, what is the trigger behind this additional increase in coupon rate? It is because of the taking, it is because of the new borrowing. So, when you are evaluating कि यार इसका impact क्या है, you should incorporate this part also. ठीक है। Now, as per data, if borrowing increases, the rate on existing borrowing will increase by 37 basis points। ठीक है। Rate on existing borrowing will increase by 37 basis points। Now, since new borrowing of 1320 million has happened, the rate of borrowing on existing borrowing, uh, the rate of interest on existing borrowing has gone up। ठीक है। सो additional interest cost incurred is कितना? आपका एग्जिस्टिंग बोरोइंग कितना था, डू यू नो? 120 मिलियन था, राइट? एग्जिस्टिंग बोरोइंग इज 120 मिलियन। तो दिस विल बी 120 मिलियन इंटू 0.37%। ठीक है। विच इज 0.444। यहां पे आप लिखेंगे लेस additional interest on
एग्जिस्टिंग लोन, ठीक है, -0.444, उसके वजह से भी होगा टैक्स सेविंग, दिस इंटू 0.15%, ठीक है, ये हो गया। अब what are the two proposals? Proposal 1, buy back equity shares at the current share price and they would be cancelled. Proposal 2, invest in additional assets in the new business venture. So, whatever money you raise, you invest that in new assets, which will pay you an interest of, which will pay you how much return will that generate? After tax return on new investment is estimated at 12%. ठीक है, add post tax return on इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन प्रपोजल टू इज 1 सेकेंड। ओके, सो इन प्रपोजल टू व्हाट विल हैपन, 1320 will be invested in new assets. So additional return is 1320 into 12%, कितना आता है? 158.40, ठीक है, तो यहां पे लिखो 158.40। अब ये है आपका एग्जिस्टिंग डेटा, ठीक है, एंड after that what you have is you have revised forecast earnings, ठीक है, these are your revised forecast earnings। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सिमिलरली यू विल हैव टू प्रिपेयर, और क्या क्या प्रिपेयर करना है आपको? यू हैव टू प्रिपेयर फोरकास्ट फाइनेंशियल पोजीशन, फोरकास्ट ईपीएस, है ना। अब वो कैसे होगा? रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, दिस इज रिवाइज्ड फोरकास्ट ऑफ पी एंड एल, ठीक है। अब यहां पे हम लिखेंगे रिवाइज्ड फोरकास्ट ऑफ बैलेंस शीट। नॉन करंट असेट्स कितना था? 1735, 1735। तो यहां पे रहेगा 1735, यहां पे रहेगा 1735, यहां पे हो जाएगा 1735 प्लस 1320, 3055 इज 1735 प्लस न्यू इन्वेस्टमेंट 1320, करेक्ट। एंड करंट असेट्स, करंट असेट्स कितना है अभी? 530, ठीक है। प्रपोजल 1 एंड प्रपोजल 2, हाउ विल दिस नंबर चेंज इन योर माइंड? क्या लगता है आपको? Will this number remain the same or will this number also change? Think about it. Current asset, ठीक है। अब क्या होगा? आप इंटरेस्ट पे करोगे ना, राइट? What is 489.5? It is existing current assets minus net interest, राइट? इंटरेस्ट तो आप तो कैश में से ही पे करेंगे ना, जो आपके पास कैश पड़ा है, ठीक है। अब प्रपोजल 2 में 530 प्लस ये, और क्या ऐड होगा? 158.4 ऐड हो जाएगा, सो 647.9
is existing current assets minus net interest plus post tax return on न्यू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये हो गया आपका करंट असेट एंड करंट लाइबिलिटी। ठीक है, नॉट करंट लाइबिलिटी, आपका नॉन करंट असेट एंड करंट असेट हो गया। ठीक है, अब लाइबिलिटी साइड का देखो, शेयर कैपिटल एग्जिस्टिंग है 400। ठीक है, प्रपोजल 2 में भी 400 रहेगा। You are going to buy back equity shares at the current market price. What is the current market price for equity share? दिया है आपको कहीं पे? 11. And its current share price is 11। तो 1320 जो है, 1320 million will be applied for buyback। ठीक है, price per share is 11। So do you agree number of shares bought back will be 1320 upon 11? What do you think? यही होगा ना? कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक इज 120। तो ये कितना होगा? 400 माइनस 120, दिस विल बी 280। देन रिजर्व्स, टोटल है रिजर्व्स का, यहां पे है 1700। नाउ व्हाट इज द फेस वैल्यू? फेस वैल्यू इज 1 पर शेयर। ठीक है, शेयर ऑफ फेस वैल्यू 1 इज bought back for 11। So premium paid on buyback कितना होगा? 11 into 10, 11 नहीं सॉरी, 120 into 10, दैट इज 1200, है ना? तो इसमें से -1200 करना पड़ेगा, बट आई डोंट थिंक दैट इज इनफ। वाई इज दैट नॉट इनफ? बिकॉज आपको ये जो पूरा इंपैक्ट है ना, सॉरी, माइनस सम, इसका भी इंपैक्ट आपको कंसिडर करना पड़ेगा, राइट? विच इज, सॉरी, प्लस साइन आएगा यहाँ पे, 459.5। सो 459.5 इज 1700 माइनस 1200 प्रीमियम पेड ऑन बायबैक माइनस नेट इंटरेस्ट। ठीक है, इधर कैसे होगा? 1700 एंड ये नेट फिगर। ठीक है, सो ये हो जाएगा 1659.5 एंड इसमें ऐड करना पड़ेगा 158.4 बिकॉज दैट विल अल्टीमेटली गो टू रिटेन्ड अर्निंग्स। अब यहां पे लिखो आप आपका नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, एग्जिस्टिंग नॉन करंट लाइबिलिटी है 120, बट आप और लेने वाले हो 1320 का लोन, है ना? 1440 हो जाएगा। करंट लाइबिलिटी कितना है? करंट लाइबिलिटी 45 का है, तो उसमें तो कोई चेंज नहीं है, दैट फिगर हैजंट रियली चेंज्ड। ठीक है, देन चलो हो गया आपका बैलेंस शीट। लेट्स सी इफ द टोटल ऑफ असेट साइड एंड लाइबिलिटी साइड मैचेस और नॉट। मैच हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो रोते रहना। एग्जाम में टाइम नहीं होगा तो मैच करने में टाइम वेस्ट मत करना, जितना करेक्ट किया है उतना लेके मूव ऑन, अदरवाइज अननेसेसरी आपका दिमाग खराब होगा and we can't afford to have that in the paper. Very clearly, this is tallying, and I'm so happy that it is. ठीक है, ये बन गया आपका रिवाइज्ड फोरकास्ट ऑफ बैलेंस शीट।
ठीक है। अब यू कैन कैलकुलेट गियरिंग ऑल्सो, क्या क्या पूछा है आपको, दैट आई एम नॉट कैलकुलेटिंग बिकॉज इट्स इजी, है ना। फोरकास्ट गियरिंग पूछा है, फोरकास्ट ईपीएस पूछा है। ईपीएस के लिए यू हैव प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, गियरिंग के लिए यू हैव डेट एंड इक्विटी, यू हैव ऑल ऑफ दैट। And using the estimates in B1, B2, and B3, discuss the impact of the proposed financial reconstruction and the proposals on the use of funds on Conejo, reactions of credit rating agencies, Conejo companies' equity shareholders, and companies न्यू डेट होल्डर्स। ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअली क्या क्या होगा। ठीक है। अब व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ क्रेडिट रेटिंग कंपनीज? क्रेडिट रेटिंग कंपनीज, so what credit rating agencies do is they calculate what is your credit worthiness based on default and recovery rate. Now, a migration from A to triple B means that the company has become riskier. It is likely to default more, and it's more risky as compared to the A level wala investment. ठीक है। What does duration indicate? Duration indicates the time it takes to recover the payment in the bond amount in present value terms. So jitna duration zyada utna risk is higher, and a credit rating company will consider this and a number of other criteria while assigning the credit rating, and naturally that will have an impact on how the entity is perceived. Thinking of equity shareholders, ठीक है, if a buyback happens then the EPS is likely to increase, but that means the money is not invested in positive NPV generating projects. अगर आपने पॉजिटिव एनपीवी जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स में डाला तो आपका बायबैक का मतलब शेयर बेस विल रिमेन द सेम, है ना। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स विल बी कंसर्न्ड कि यार व्हेन यू आर रेजिंग मोर डेट, it is also leading to an increase in the cost of borrowing and all of that. So are there any other, when you are taking this 1320 का loan, are there any other debt covenants that might be forced upon you? तो वो आपको एक check करना पड़ेगा. Debt holders are also going to get impacted by this in a major way. Although current equity share, sorry, current bond holders को कोई problem नहीं है. The migration from A to triple B basically now, and gearing levels increasing means somewhere the company is preparing itself for a high risk position, and with that high risk position naturally the current and the new debt holders will be more concerned about the ability of the company to pay back the capital amount. So सब पे इसका impact होने वाला है। ठीक है। इसका the answer at the back is pretty decent. So make sure that you go through that answer carefully. It's a theory answer. Similarly, the first part of the question is also a theory answer that you will be able to manage. But iska numerical part was actually slightly tricky, which is why I decided to do it. ठीक है।